हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो विथ हरप्रीत। आज हम नई स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसका नाम है 1045 स्ट्रैटेजी। सो पहले हम थ्योरी देखेंगे इसकी। सो लेट्स गो टू निफ्टी बैंक। सो 1045 स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड फिन निफ्टी। सो 1045 स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या बोलती है? 1045 स्ट्रैटेजी विल बी यूज इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज़ होगी। मार्क द लो एंड हाई ऑफ 5 मिनट कैंडल एट 10:45 AM। 10:45 AM वाली जो कैंडल बनेगी उसका हाई एंड लो मार्क करना है 5 मिनट वाली कैंडल का। इफ़ एनी कैंडल ब्रेक्स हाई ऑफ 10:45 कैंडल, गो फॉर कॉल साइड ट्रेड। अगर कोई भी कैंडल 10:45 वाली कैंडल के बाद बनेगी और वो ब्रेक आउट करेगी तो हमें कॉल साइड ट्रेड लेना है। और उससे उसका वाइस वर्सा, इफ़ अगर पुट साइड जाएगी तो फिर हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है अगर वो लो ब्रेक करती है तो। ऑलवेज रिमेंबर टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। हम हमेशा अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे मार्केट में। क्लियर? सो हम बैक टेस्ट करके देखेंगे ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। सो 12 जुलाई, आज 13th हॉलीडे है, 12 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। सो ये वाला हम चेंज कर लेंगे टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आएंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे 9, उसके बाद हम देखेंगे 10:45 वाली कैंडल। सो आप देख सकते हो 12 जुलाई 2024 की ये 9:45 वाली कैंडल है। सो हम इसका हाई एंड लो में मार्क करेंगे। और क्लियरली आप देख सकते हो, ये मैं लंबा मार्क करता हूँ इसको क्योंकि हमें एक और ट्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है। सो क्लियरली आप देख सकते हो 10:50 वाली जो कैंडल बनी है अराउंड 52,317 मार्क में इसने हाई ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का 10:45 वाली का। और इजी 52,300 मार्क से 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल आप देख सकते हो 400 पॉइंट्स की हमें रैली देखने को मिली है। हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे इजीली। 3 कैंडल्स हमें देखने को मिली हैं। सेकेंडली हम देखेंगे 3:10 में 3:10 में हमें यहाँ पे पुट साइड में एक ट्रेड मिला है जिसने 10:45 वाली कैंडल को ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है। सो 52,270 लेवल पे आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ एक पुट साइड ट्रेड मिला है जिसने कि अराउंड 40 पॉइंट्स दिए हैं। फिर हम देखते हैं 11 जुलाई को देखेंगे। 11 जुलाई 10:45 देख सकते हो, ये 10:45 वाली कैंडल है, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। सो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेड मिला है हमें अराउंड 11 AM। पुट साइड का ट्रेड है, स्कैल्पिंग ट्रेड है। 51,807 लेवल से लेकर अराउंड 20-30 पॉइंट्स का ट्रेड है। सो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। 30 पॉइंट्स में से 10 पॉइंट्स लेंगे इजी। अगेन आप देख सकते हो, इसको मैं लंबा मार्क करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल रहा है 11:35 पे, 11:45 पे एक मिल रहा है, 11:40 पे एक मिल रहा है, 11:55 पे एक मिल रहा है। और यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई है 12:15 से। आप देख सकते हो 51,881 लेवल से लेकर आप देख सकते हो ईजिली हमें यहाँ पे 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट देखने को मिले हैं। अगेन यहाँ पर 1:35 में आप देख सकते हो 51,881 पे फिर हमें एक रैली मिली है और एक बहुत बढ़िया मूव मिला है। आप देख सकते हो अराउंड 300 पॉइंट का मूव है। सो ईजिली ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है बैंक निफ्टी पे, 10:45 स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है। अगेन 10 जुलाई को हम देखेंगे। 10 जुलाई का हाई एंड लो मार्क करेंगे। टेंथ ऑफ जुलाई का हाई एंड लो मार्क करेंगे हम। क्लियरली आप देख सकते हो हमें 1-2 स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ मिले हैं अपर साइड में। और यहाँ पे एक अच्छी रैली देखने को मिली है 2:30 पे। आप देख सकते हो एक कॉल साइड का ट्रेड मिला है हमें अराउंड 52,158 पे। वी गॉट अ ट्रेड एंड वी विल बी ट्रेडिंग आर स्टॉप लॉस इजी, 100 पॉइंट्स वी गॉट।
Again you can see at 3 p.m. again at 52,159 level we got the trade, again easy 100 points. Even at 315 also we got 50 points odd trade, so easily we got trade. Again we can see 1045 candle, so clearly we can see we got a trade around 1140 upper side, and lower side also we got trade around 11.5, 11.10, 11.15. These are the scalping trades. This is a good trade because the body of the candle is cutting or breaking out the high of 1045 candle, so easily here also we got 100 points. Again this downside at 1240 we got a trade, at 1210 we got a trade, scalping trades, so small we can easily fetch 10 points, 20 points. Again with as per this trade we can get much more. Let's see 8th of July, 9th of July. You have seen, so this is 1045 candle, will mark the high and low, will mark the high and low, and easily you can see here 1050 candle break down the low of 1045, so here around 52,525 level we got a trade, easily we can trail our profit easily. One candle, two candle, three candle, easily 100, 150 points we can get easy trade. Then 5th of July, 5th of July we can see we got a trade around we can clearly see we got a trade around 1130, 1130 we got a trade around 52,610 level, one candle, two candle, around 70 points here. This in this box the market is consolidating, one trade we got here, one small scalping trade we got here around 300 around 52,510 mark at 1:10 p.m. so small scalping trade 15-20 points. Again one scalping trade here 145 pay, so small trades we are getting. So clearly you can see one scalping trade here, one here, two, then here one more 12:05 p.m. पे 52,918 मार्क पे एक ट्रेड यहाँ पे हमें मिला है, इनिशिएट हुआ है, एंड ये रैली ऊपर गई है, सो क्लियरली वी गॉट ट्रेड हियर 20 पॉइंट में लेके अपना ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देना है. Again you can see put side trade we got around 11 o'clock at 53,103 mark. So from here see 1 2 3 4 5 6 candles downside, easily 100 points, easily 100 points. Again you can see there are so many scalping trades, 10 point 20 point trades, also upside trade here you can see at 150. This trade is a scalping trade of for 10-20 points. So there are days when we are getting long trades and there are days when we are getting scalping trades. It depends on the situation how the market behaves.
10:45 you can see this candle. So we got a fantastic trade here at 11:35, around 52,274 mark. So easily this will trail, and then the second candle also we will trail, and we will have trailing stop loss. So easily यहाँ पे भी हमें 50-70 पॉइंट मिल जाते. बहुत अच्छा मूव मिला है मार्केट को. मार्केट डाउन साइड था पूरा. अगेन यू कैन सी दिस 10:45 कैंडल. यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस 11:15 कैंडल ब्रोक द हाई ऑफ 10:45 कैंडल. सो क्लियरली 52,431 पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है 11:15 पे. 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, आप देख सकते हो 150 पॉइंट्स मिले हैं हमें यहाँ. इजीली 150 पॉइंट्स मिले हैं. इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है. आराम से मार्केट में आना है 10:45 में, 5 मिनट वाली कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना है. उसके बाद जिस तरफ भी मार्केट जाता है उस तरफ का ट्रेड लेना है, कीपिंग इन माइंड योर लॉट साइज, रिस्क, एंड कीप ट्रेलिंग योर प्रॉफिट टू रेजिस्ट योर लॉसेस. इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है. कौन देगा आपको इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी? मैं प्रॉपरली आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ. आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ. आप देख सकते हो ये 10:45 वाली कैंडल है. यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है. इन केस आपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी होती. सेकंड ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ मिला है. उसके बाद ये थर्ड कैंडल गई है. थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद और एक कैंडल नीचे गई है. इजीली 100 पॉइंट्स की यहाँ रैली मिली है. अगर थोड़ा और आप वेट करते, एक और बड़ा मूव मिला है 300 पॉइंट्स का. ईजी ट्रेड. ट्वेंटी सेवन्थ का देख लेते हैं. 27 को वाली कैंडल का 10:45 वाले का लो एंड हाई मार्क करते हैं. अब क्लियरली देख सकते हो यहाँ 10:55 पे एक कैंडल बनी है जिसने ब्रेक किया है 10:45 का हाई. सो क्लियरली 52,745 पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है हमारा. सो हम अपना प्रॉफिट ट्रेल करेंगे. 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, यहाँ तक हम जाएंगे इजीली. हमें 150-200 पॉइंट्स मिले हैं. So let's see chart of 26th of June at 10:45. We can clearly see a green candle formation. So we will be marking low and high of first 15 minutes, first 5 minutes. So again you can clearly see at 10:50. So we can clearly see at 10:50 we got a trade. So from 10:50 at 52,539 mark we got a trade. So you can see 1 2 3, then consolidation again 6 candles. We got around 300-400 points. So on 26th of June we got good trade as go 10:45 strategy. Let's see 25th of June. 25th of June 10:45. 10:45 we can see this green candle formation at 10:45. So let's mark low and high. So you can clearly see some of the scalping trades here, like this red candle gone downside, broke the low of 10:45 candle. So clearly 52,085 mark we got a trade downside. We will be taking put. So easily you can see 30-35 points we are getting out of this. Here also one scalping trade, again here one small, and this the high breakout you can see clearly at 12:25 p.m. 52,176 mark. So clearly from here a good rally you can see, 3 big candles, 176 to 463, 300 points. Easy or not easy? Now let's see. Now let's see 10:45. This is a
red candle, clearly marking the high and low. You can see the second candle. You can see at 11 a.m. we got a scalping trade, 30-40 points. Again, if we would have continued this trade, got around 70-80 points. Again, you can see at 11:15 again a trade is initiated, 51,527 mark. Again a big bullish trade, 3-4 candles consistent blue. So you can see again 21st of June. Let's see 10:45 strategy worked or not. 10:45, a red candle marking the high and marking the low clearly. So many scalping trades we can see to mark till here. So clearly you can see the first trade initiated at 12:15, and then you can see at downside at 1 and 1 5 around 51,351 mark. So around 50 points it gave. Again you can see 1:50 में आप देख सकते हो at 51,463 mark we got a trade from here. This is first candle, second candle, third candle. Such big points, 250 points we easily got 250 points. So on 21st also the strategy worked. Let's see 20th of June, 10:45 marking the high and low. So clearly you can see we got a trade here, first trade at 11 o'clock, easy. We would have initiated a trade at 51,528 mark, easy, you can see. And when the second candle started to reverse, we would have squared off, as I have told you, to keep your profit trailing, keep stop loss. So as soon as this candle appeared, your stop loss would have been hit, and your positions would have been squared off automatically. Okay, so let's see 19th of June what happens. 19th of June, this candle, red candle, 10:45. So you can see here this is 10:45 candle. So you can see 10:55 candle is breaking the high of 10:45. So clearly a call side trade is initiated, 50,810 mark. From here to, we can trail our profit. You can see huge candle, 150 points, and again around 300 points, easy or not, without any indicator, just marking the high and low, keeping in mind the lot size, applying trailing stop loss, and taking a trade. So this is 10:45. This is a small doji candle. You can see clearly at 10:15, and trade is initiated. From 10:15 we can take this trade. We can square off in one candle only, or we can hold our positions till here. As soon as a red candle appears, we will square off our position. This was also a good day. Any point is profitable. Any trade is a profitable trade if we don't make any loss, or we fetch any, if we fetch 5 points or 10 points, it is a good trade. Just regret if you make a loss, and that too if you are not disciplined.
because if you will be disciplined at your work, at taking trades, you won't have regrets over your losses even if you make one. So clearly 10:55 we initiated a trade downside, broke the low of 10:45 candle. Again here a small scalping trade continued by this candle, and again this a big 100 points candle. So clearly we got the trade here. Then we will see on 13 June we'll mark. So this candle, big wick, small body, reddish. So we will be marking the high and low. Simple strategy. So you can clearly see this is 9:45. Then first trade at 10:55 initiated downside, broke this net 10:55 candle, broke downwards. So we can go for put here at 49,937. Clearly see around 20 points it is given. Then at 11:15 you can see again the same 49,937. One candle, two candle, you can see easy. Again upside, you can see at 11:45 49,973 mark it broke the high of 10:45 candle. So from 49,973 easily we got 50 points. After the reversal we'll be squaring off our profit. Similarly small scalping trade here at 140, one candle, two candle, bearish side. Again here one candle, consolidation, again candle, little consolidation downwards. So 3-4 trades in some scalping trades, some long trades. On 12th of June we'll see. 12th of June you can see you can see this is a red candle, a bearish candle formed in 10:45. So first trade you can see a small body is piercing downward, breaking the low of 10:45. So at 50,183 level we will initiate our trade. 1 2 3 candles will go easily 50 points. Again if we will hold our positions a little down and a big bearish candle, you can see 100 point candle, 110 point candle. So easy, as easy as this. The only thing is you have to keep your risk in check. Always use stop loss and keep trailing your stop loss. Keep trailing. It doesn't matter how many times it hits, keep trailing. Brokerage is not a big cup of tea. We can take multiple trades, but we should not take loss. That is our main motto. We should not take loss. So we'll see of 11th of June. Clearly so many scalping trades. First trade here 10:20 easy at 49,854 mark. One candle, two candle, easy. Then again here you can see 115, you can see one candle, two candle at 49,893 mark. So easily trailing our stop loss, we can book profit in 30-40 points minimum. If anyone will book 3-4 points, you can easily book as a beginner. 4 points, 100 or 50 lot size, around 200-400 rupees will easily get profit. See here at 2 p.m. a big candle downside, breaking the low of 10:45 candle. Clearly you can see 49,850 level. So clearly 35-40 points easy. Let's see 10th of June.
this is a big candle. So you can clearly see first at 11 o'clock first trade is initiated, a small scalping trade. Then again 11:15, 1 2 3 candles, 100 points rally, easy. Then again you can see here at 12:30, again at 49,876 level our trade is initiated, easy, a big rally you can see. Let's see 7th of June. So this is 45, this candle, green candle with equal body and equal wick. So mark the low and high of the candle. You can see first trade, scalping trade is initiated at 10:05, at 11:05, which is breaking the high of 10:45 candle, this candle. So first trade is initiated here, 49,616. Clearly you can see 30-40 points, again 49,616. You can see one more trade, 1 2 consolidation, 3 4. So big profit. कुछ करना पड़ा आपको, कुछ नहीं करना पड़ा, बस मार्केट में आए 10:45 पे, 10:40 पे आए, वॉच किया 10:45 कैंडल फॉर्मेशन, हाई एंड लो मार्क किया, उसके बाद जो प्रेफरेबल आपको ट्रेड लगा उसमें आपने इनिशिएट किया, प्रॉफिट बुक किया, स्क्वायर ऑफ किया, एंड यू एंजॉयड योर डे, नथिंग एल्स. सो क्लियरली दिस यू कैन सी स्मॉल कैंडल एट 10:45. एक यहाँ पे हमें छोटा सा 10:50 पे ट्रेड मिला है डाउन साइड का, ब्रेकिंग 10:45 लो. उसके बाद आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड मिला है विच इज़ ब्रेकिंग अगेन 10:45 लो, 49,564 लेवल पे आराम से आप देख सकते हो. 100 पॉइंट का ये कैंडल है, 100 पॉइंट का ये कैंडल है, एंड अगेन 50-70 पॉइंट्स का ये कैंडल है. सो इजीली 150 पॉइंट्स ईजी. अगर आप थोड़ा सा और रुकते कंसोलिडेशन का के लिए तो आप देख सकते हो इतना बड़ा कैंडल मिलता, 300 पॉइंट्स. कैन यू इमेजिन 300 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी? So that is why I'm telling you, keep practicing this setup. This is very powerful setup. Again this candle you can see, this candle you can see marking the high and low. So easy from here 10:55 you got a trade at 47,007 level, easily 1 2 3 4, easy going 800 points, 700 750 points, easy, as easy as this. 4th of June, let's see what happened. 4th of June. So this is a candle probably. So marking the high and low of 10:45. So you can clearly see here we are getting a trade. Clearly see this is an inside candle after this, and from here we can initiate our trade 48,588 level. 1 2 3, even it goes back, trail your profit, and then 4 you will be ending up your position somewhere here. So easy 300 points rally downside, easy booking. Let's see 3rd of June. 3rd of June was a very was an election day, so it was the market was very consolidative, kind of a huge gap up, then no movement it seems. Clearly you can see we are getting a trade here 11:10, from 11:10 1 2 3 4 and a big rally. So clearly 150 points with no movement, also we are getting 150 points. So that is what I wanted to show you. If you have good setups, good mindset,
good checks and balances on your losses and lot sizes, you'll end up in good hands. So this is 15 minute 10:45, 31st of May. We'll see just 1-2 days of mine. You can see clearly this is a scalping trade, 2-3 candles. A reversal, we will our trailing loss will, stop loss will be hit. So again you can see here, from here you can see again a rally upside. One more day we'll see, then we will move to Nifty 50. So clearly you can see what you have to do. You have to come, when you will come in the market, you will see candles are forming like this, red green red green. So what you have to do, you have to come at market at around this time, 10:40. Okay, then you will see a candle formation at 10:45. When this candle forms, you just have to mark this like I'm marking the low and high of this candle. Okay, now what you have to do, you have to see if the lower side breaks. If 10:45 candle low break, so what you have to do, you have to go for put side, bearish momentum side. So what you have to do, so yes, so what you can see is a downside momentum, 9:45 is a downside broke. So we will initiate a trade around 48,694 level. You can see easy, it has come this way, it has come 60 points, then again a rally of more 100 points. Easily you can, in 160 points you can easily book at least 20 points you can book. Being a layman or being a beginner, you can book 30-40 points. That is what I can say. So now let's move to Nifty 50. We are done with Nifty Bank. Let's see Nifty 50 first. How this strategy is working. This is 15-minute time frame. We'll change it to 5-minute. Okay, so it is 12th of July. Today is 13th of July and today is Saturday, so market is closed. We are back testing our setup for you people. So clean, as clean as this, you can see हमें इतना प्यारा ट्रेड मिला है, इतना प्यारा आप क्लियरली देख सकते हो. ये 10:45 वाली कैंडल है, 10:50 वाली कैंडल है, 45 का हाई ब्रेक किया है. इस जगह पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे 24,394 मार्क पे. आप देख सकते हो 394 से लेकर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल 200 पॉइंट दिए हैं आपको. और क्या चाहिए, पूरे हफ्ते की प्रॉफिट दी है एक दिन में. ईजिली ये 200 पॉइंट में आप 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे. अगर आपका 100 का भी लॉट साइज होता तो 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाती है आपकी 15 मिनट में, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट. सो एज ईजी एज दिस. दिस इज़ अ पावर ऑफ 10:45 स्ट्रैटेजी. मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ. दैट इज़ वाई आई एम showing you people, so that you can also make profit out of this strategy. This is a simple strategy without any indicators, because indicators लगाने से थोड़ा लेंदी हो जाता है. सो आप देख सकते हो ये 10:45 वाली कैंडल है. फर्स्ट ट्रेड यहाँ छोटा छोटा था, सो हम इनिशिएट नहीं करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिला. यहाँ हम फर्स्ट ट्रेड अपना स्कैल्पिंग ले सकते थे 11:40 पे. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रेड. एंड यहाँ पे एक डाउन साइड पे ट्रेड बन रहा है. आप देख सकते हो 24,235 मार्क पे एक डाउन साइड ट्रेड बना. हम यहाँ तक जाते अपना प्रॉफिट टेल करके स्टॉप लॉस लगाया रहता हमने 5-10 पॉइंट का, और एज सुन एज रिवर्सल आता हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता और हम प्रॉफिट में बाहर निकलते. अगेन यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है 24,260 मार्क पे. ईजिली आप देख सकते हो एक रैली मिली है, ईजी. अगेन आप देख सकते हो 10:45 का यहाँ हाई मार्क करते हैं, यहाँ लो मार्क करते हैं. आप देख सकते हो यहाँ हमें 10:55 वी गॉट आवर फर्स्ट ट्रेड. दिस इज़ अ स्कैल्पिंग ट्रेड 10-20 पॉइंट्स.
Again, these all trades are scalping, but with larger wick we won't initiate our trade because body is very small. But clearly I think here we will initiate our trade, and this 4-5 कैंडल्स will capture आराम से 100 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। 9 जुलाई का देखते हैं, ये है 1045 वाली स्मॉल कैंडल, ये वाली आप देख सकते हो, एज स्मॉल एज दिस। इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हो 11:15 में हमें एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है। दिस वाज अ स्कैल्पिंग ट्रेड, इजीली 30-40 पॉइंट्स वी कुड हैव ब्रूड। अगेन यू कैन सी हियर, इसको हम लंबा कर लेंगे। यू कैन सी 11:15 में हमें हुआ है एक ट्रेड मिला है, अगेन 11:30 में मिला है, एंड यू कैन सी यहाँ हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करते बिकॉज बायर्स एंड सेलर्स इक्वल हैं, विक बड़ी बनी हुई है, बॉडी बहुत छोटी है। स्टिल एक यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है 12:10 में, इजीली 24,382 मार्क वी गॉट अ ट्रेड। 15-20 मिनट में हमें इजीली 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ, 83 से लेकर 99, यहाँ 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये 100 पॉइंट्स का है शायद, 24,383, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स आर देयर। यहाँ हमें 50 पॉइंट्स प्लस मिल रहे हैं। 8th of July का देखते हैं, at 10:45 you can see formation of a red candle, a bearish candle, formation of a bearish candle। so हमें यहाँ पे ये ट्रेड मिला है 11:5 we got a trade, bearish कैंडल ने ब्रेक किया है 10:45 का लो, 1 कैंडल 2 कैंडल डाउन, इजीली 50 पॉइंट्स यहाँ बुक हुए हैं। अगेन वी गॉट अ ट्रेड at around 10:35 we can initiate a small scalping trade here, 1 candle 2 candle down, again 50 points। again at 10:55 we got a scalping trade, 12:05 again we are getting easy money here, 2 candles down breaking the low of 10:45। let's see 5th of July marking the high and low of 10:45। you can clearly see first trade we are getting on the next candle is breaking the low of 10:45, so scalping trade we are getting here। so easily the second trade we have initiated at 10:05 11:05। let me make it long, then you can see here this beautiful trade at 11:35, 24,261 mark, clearly you can see bullish candle breaking the high of 10:45, clearly we got a trade here, easily 2 candles 30 points, at least we could have captured 20 points out of 30 points। 4th of July, this is I'm showing you Nifty 50, we have already seen Nifty Bank, now we are seeing Nifty 50, then we will see Sensex and finnifty। so you can see so clearly you can see marking the high and low here, one scalping trade we got at 11:05, second scalping at 11:15, then this rally went high, 3 continuous green candles, easy 30 points। if you'll make it large, we'll make it long, you'll see again we got a trade at 12:20, 2-3 candles high, so easy। again got a trade here, a small scalping trade 10 points। if a day when the market is not volatile and candlesticks are consolidating, we can initiate
small scalping trade, small with big large lots, keeping in mind profit and loss as per your convenience. And when volatility is high, with less lots also you can make more profit. Again on 3rd of July you can see 11:10 a scalping trade, again 11:20 a big candle, 24,271 level, again a small scalping trade here, but won't recommend you to take. Again you can see at 2 p.m a reddish candle broken the low of 1045, 24,270 mark. So clearly, then again we will see 2nd of July, 2nd of July को देखते हैं 1045 काम किए कि नहीं. 2nd of July, ये लो है इसका, लो एंड हाई मार्क करते हैं. $10.45. सो अगेन यू कैन सी 10.55 पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, 10.45 का हाई ब्रेक किया है. सो 24,153 पे इनिशिएट करेंगे अपना ट्रेड इजी. 10 पॉइंट्स here, 10 यहाँ, 10 40-50 पॉइंट है यहाँ पे हमें मिले. यहाँ आप देख लो एट 12:35 एक डाउन साइड का ट्रेड मिला है 24,134 मार्क पे इजीली. यहाँ डाउन साइड पर ट्रेड मिला है हमें 12:35 पे. इतनी बड़ी कैंडल है, कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हो. और नीचे आया मार्केट 150 पॉइंट्स के अराउंड यहाँ पे है. 1st of July का देखते हैं. 1st of July 10:45 वाली कैंडल ग्रीन बनी है, क्लियरली आप देख सकते हो. मार्किंग द हाई एंड लो. यहाँ फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो 11:15 वाली, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हुआ है 24,087 पे. स्मॉल कैंडल बनी है दूसरी, यहाँ से यहाँ तक हम अपनी पोजीशन लेके जा सकते थे इजीली. अपर साइड पे कंसोलिडेट हो रही है, यहाँ पे हमारा प्रीमियम डाउन होगा. सो 1-2 कैंडल स्कैल्पिंग करके हम अपना प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ करेंगे, ट्रेड को लॉन्ग नहीं खींचेंगे. 28 का देखते हैं, ये वाली कैंडल है 10:45 वाली. हाई एंड लो मार्क करेंगे इसका. आप क्लियरली देख सकते हो 1-2 स्कैल्पिंग ट्रेड मिले हमें छोटे छोटे. यहाँ पे 24,127 मार्क पे एक ट्रेड मिला है हमें 30 पॉइंट्स का. फिर आप यहाँ देख सकते हो 11:50 पे हमें 24,126 एक ट्रेड मिला है इजीली. यहाँ आप देख सकते हो 25-30 पॉइंट्स कंसोलिडेशन करके आप देख सकते हो. यहाँ पे अराउंड 100 पॉइंट्स दिए हैं. निफ्टी 50 कम वॉलेटाइल होती है, इसमें पॉइंट्स भी कम मिलते हैं, बट दिस इज़ मच सेफर. देन वी विल सी 27th of June. 27th of June 10:45 वाली कैंडल देखते हैं. इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं इजीली. यू कैन सी यहाँ पे 10:55 पे एक ब्रेकआउट आया है, इसका हाई ब्रेक हुआ है 10:45 का. यहाँ पे 23,860 पे हम एक ट्रेड लेते इजीली. यहाँ से हम अपना प्रॉफिट ट्रेल करके एक अच्छी रैली देखने को मिली हमें 100 पॉइंट्स की. और एक every single day we are getting trade on the basis of this setup which is 10:45. This is a green candle, 10:45 candle. Again you can see the very next candle broke the high of 10:45. So here we are clearly initiating a trade. यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 कंसोलिडेशन 4 5 6 7 इतनी कैंडल्स ऊपर गई हैं इजीली. 100 पॉइंट्स वी कैन बुक. 25 जून का देखते हैं.
25 जून का आप देख सकते हो 10:45 वाले हाई एंड लो मार्क करते हैं इसका। क्लियरली आप देख सकते हो 12:25 वाली यहाँ पे हाई 12:25 वाली ने हाई ब्रेक किया है 10:45 का। क्लियरली 23,610 पे हमें एक ट्रेड मिला है। 3 कैंडल्स कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स मिली हमें और इजीली यहाँ एक प्रॉफिट बना है। अगेन 24 जून को 10:45 वाली कैंडल आप देख सकते हो, छोटी सी बॉडी है, विक बड़ी है इसकी। 10:45 के बाद 10:50 वाली इनसाइड कैंडल है। 10:55 इज ऑल्सो इनसाइड। 11 o'clock वाली ने बॉडी के साथ हाई ब्रेक किया है 10:45 का। क्लियरली वी कैन इनिशिएट आर ट्रेड 34,492 लेवल पे। क्लियरली यहाँ से एक अप मूव मिला है और हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इजीली। अगेन हमें यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, आप देख सकते हो 11:45 की कैंडल का विक यहाँ टच हो रहा है। अगेन यहाँ पे एक हम ट्रेड ले सकते थे, स्कैल्पिंग ट्रेड 30 पॉइंट्स का। 30-40 पॉइंट्स हम इजीली बुक कर सकते थे। अगेन यू कैन सी दिस इज 10:45 कैंडल। आप देख सकते हो 12:35 में इसका लो ब्रेक हुआ है। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 10-15 पॉइंट्स इस कैंडल ने दिए हैं, 25 पॉइंट्स इस कैंडल ने एंड 10 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको डाउन साइड मोमेंटम मिला है। अगेन आप यहाँ देख सकते हो 23 यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है 23,493 लेवल पे। क्लियरली यहाँ भी आपको 50 पॉइंट्स मिले हैं। 20 जून का देखते हैं। 20 जून 9:45 कैंडल, स्मॉल कैंडल विथ स्मॉल बॉडी। On 20th June, market was less volatile, so we have not seen much momentum. Candles have also formed very small. You clearly see here 11 o'clock we got a scalping trade here. The 19th of June we will see 10:45 candle, the red candle will mark the high and low. Then we will see where we are getting the trade. So you can clearly see this 10:55 candle around 24,464 mark, we are getting a trade here, and these 2 consecutive candles around 50 points easily we are getting. Then the market is consolidated and again moved high. So 50 points already is enough. There are other things to do as well, because we will do very safe trading. We won't land up in any risk or any loss which we cannot afford. So you can clearly see on 18th of June candles are consolidating in such a way that there is no volatility. Still we can afford a couple of trades, but it will be scalping trade. You can clearly see 12:25 you can clearly see scalping trade here around 23,532 mark. Clearly see this 10 points a small, we can afford to steal 3-4 points and square off our position, or our stop loss would be hit. Again here we can see 10:45 clearly we can see here a breakdown, a breakout downward side of 10:45 candle, small scalping here, small here, small here, small here, 20-30 points easy. Again at 12 p.m. you can see 2 consecutive bearish candles, small scalping here as well. So 13th of June 2024 we'll see 10:45 marking the high and low, marking the high and low.
You can see initially candles are consolidating at 10 10 11 10. A downside movement came, broke the low of 1045 around 23,373. A downside trade is initiated around 20-25 points with consecutive 3 candles, 30 35 40 points. So here a good trade for the day. Again at 11:45 a green candle is breaking the high of 10:45 at 23,387 mark. So again you can see 25 points. Again at 12:15 a wick is touching 10:45 mark boundary. So from here also a small scalping trade is initiated of 5 7 10 points. Again you can see a scalping trade here 23,388 at 150. 12th June we'll see. 12th June you can see marking the high and low. Here we got easy trade. This was a scalping trade, consecutive 2 candles. Then you can see here at 11:25 a big candle formation, easy 30-40 points easily you got. Again you can see at 12:05 again it is a bearish candle breaking the low of 10:45. Again a put side trade is initiated 23,418 level, easily 15 points. Again you can see 12:40 easily 23,418 mark, easily you can see 20 points here. So these are easy trades as per 9:45 strategy. This is the third strategy which this is the fourth strategy which I'm sharing with you. I've already shared 9:15, 9:20 and 9:45, and this is 10:45 strategy. I'll be sharing more strategies with you in the coming days. 10:45 you can see almost all the candles are consolidating. Here we got a scalping trade 11:10, a small scalping trade of 5 to 10 points. If we wanted we could have taken. Here you can see a long trade with a green candle rally, you can see going upward at 12:40 23,329. From here you can see upper side trade again 10:45 we'll see will mark the high and low, will mark the high and low. Clearly you can see at 10:55 got opposite trade here. Then you can see 11:20 we got a trade 11:20 1 and 2 consecutive candles. Then again you can see 13 at 135 breaking the high of 10:45 1 and 2 20-25 points, easy trade. Even downside at 2:25 we got a downside trade 23,303 level से लेकर easy 40 points in one single candle of 5 minutes. 2-3 मिनट में आपको प्रॉफिट मिल जाता easy. There is no requirement of indicators we will be using in the later strategies. I'll be teaching you that as well. First of all we are learning easiest strategies of all. I don't want to make trading complicated, that is the reason I am teaching you the easiest strategies which will help you to fetch maximum output with minimum effort. So first trade we have initiated at 11:05, you can see 11:05 easily around 20 points here. Again you can see 23,055. So clearly we can see at 11:30 23,053 mark, clearly we can see our trade is initiated. So 1 2 then consolidation 3 4, so 4 5 candles straight away 200-300 points we could have got.
Then we'll see 6th of June. Now you people will tell how you will initiate. First marking the high, then marking the low. Okay, marking the high, this one, marking the high, marking the low. Clearly we are getting a trade here, 10:55, 1 2 3. So clearly you can see 25-30 points here, and then 22,852 from here with this big candle. Easily 150-200 points trade, easy. We'll see 5th of June. 5th of June, we can see a green rally of a green candle. This is green 9, this is 10:45, high and low I've marked. So clearly you can see we can initiate a trade at 22,114 mark here. Easily we can go up easily 250 points here, easy trade. Then 4th of June we'll see. 4th of June market is falling, so this candle is 9:45, mark the high and low. So clearly you can see we are getting a trade here, 10:50 from here. Easily we are getting 22,492 mark से लेकर 103 mark, easily 300 points, easy. One trade in a day is enough if we are getting 300 points. 100 का लॉट लिया होता, 300 points मिले होते, 30,000 प्रॉफिट होता. जस्ट इमेजिन अगर 50 पॉइंट भी चुरा लिए होते तो 5,000 रुपीज़ मिल जाते. सो एज इजी एज दिस. यहाँ पे इतना छोटी कैंडल बनी है, ये आप देख सकते हो, ये वाली 10:45 की. मार्क द हाई एंड लो, बहुत छोटी कैंडल है. दिस कैंडल यू कैन सी क्लियरली 10:45. और आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो इस कैंडल पे 11:10 वाली कैंडल पे यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है. यहाँ से आप देख सकते हो एक अपसाइड की रैली है. सो यहाँ पे आप ट्रेड लेते 23,180 मार्क, 160, 170 मार्क पे यहाँ पे इजीली आपको प्रॉफिट देखने को मिला है. यहाँ से आप देख सकते हो कितना गैप है मार्केट का. 3rd ऑफ जून इलेक्शन वाला दिन था, रिजल्ट वाला दिन. 1-2 दिन हम देखेंगे मई के. सो वी विल सी 10:45 ये वाली है. सो इजीली हमें ये 10:45 वाली कैंडल है. सो आप देख सकते हो यहाँ हमें एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है 10:55 पे, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स. देन यू कैन सी यहाँ एक मिला है हमें स्कैल्पिंग डाउनवर्ड साइड, एक यहाँ डाउनवर्ड साइड मिला है. यहाँ हमें मिला है दिस हियर 22,518 लेवल पे एक डाउनवर्ड साइड ट्रेड मिला है, इजी 22,520 लेवल से 83-40 पॉइंट्स की प्रॉफिट है यहाँ पे, देख सकते हो आप इजीली. यहाँ पे आप देख सकते हो 22,559 पे एक ट्रेड मिला है. 4-5 कैंडल अप गई हैं इजीली, यहाँ पे हम कर सकते हैं. सो नाउ वी विल मूव टू फिननिफ्टी एंड सेंसेक्स. और फॉर बोथ ऑफ द इंडेक्सेस वी विल जस्ट सी द जुलाई मंथ. 10-12 दिन का देखेंगे. वी वोंट बी स्ट्रेसिंग मोर.
as this tutorial is getting longer, so 12 जुलाई है, जस्ट जुलाई मंथ देखेंगे दोनों इंडेक्सेस का। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ बहुत बड़ा मूव मिला है। 12 जुलाई सबके लिए लकी थी, जैसे 10-15 स्ट्रैटेजी का, 10-45 स्ट्रैटेजी का कुछ भी आइडिया था। सो क्लियरली आप देख सकते हो 10-50 पे 23,597 लेवल पे इजीली 1 2 3 बूम, यहाँ तक बूम किया है मार्केट। इजीली आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिली है। फिर हम देखेंगे 10-45 वाला, आप देख सकते हो यहाँ 11 o'clock में हमें एक बुलिश कैंडल दिखी है जिसने 10-45 का लो ब्रेक किया है। इस साइड हमें एक 10-15 पॉइंट्स देखने को मिले हैं इजीली। अगेन यहाँ 12 o'clock में 10-15 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल ने हाई ब्रेक किया है। सो हेयर 23,450 लेवल पे आप देख सकते हो हमें इजीली 20-25-30 पॉइंट्स मिले हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ 140 पे आप देख सकते हो 23,451 पे इजीली आप देख सकते हो हमें 150 पॉइंट्स मिले हैं। ये हम फिननिफ्टी का देख रहे हैं, इसके बाद सेंसेक्स का देखेंगे। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, फिननिफ्टी एंड निफ्टी 50 कंपेरेटिवली कम होते हैं। बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और मज़ा भी ज़्यादा आता है ट्रेड करने में, बट रिस्क भी ज़्यादा है उसमें एज़ कम्पेयर टू ये वाला इंडेक्स फिननिफ्टी एंड निफ्टी 50। उतना रिस्क नहीं है इन इंडेक्स में। सो क्लियरली यू कैन सी हियर 11:25 में आपको एक ट्रेड मिला है। यहाँ आप देख सकते हो आप अपना प्रॉफिट ट्रेड कर सकते थे इजीली। 4-5 कैंडल्स में आपको 50 पॉइंट्स देखने को मिले हैं इजीली। 9 जुलाई को आप देख सकते हो, 9 जुलाई को आप देख सकते हो 10:45 वाली कैंडल ये है। सो इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे। सो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ हमें ट्रेड मिला है, हाई ब्रेक किया है 9:45 का 10:40 पे 11:40 पे। सो यहाँ पे अराउंड 23,661 लेवल पे हमें एक ट्रेड मिला है, स्कैल्पिंग ट्रेड है 15-20 पॉइंट्स का। एट्थ जुलाई को देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिला है कि नहीं। सो 8 जुलाई को यहाँ पे 10:45 वाली कैंडल है, बड़ी कैंडल बन गई है, आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे हमें 2 स्कैल्पिंग ट्रेड मिले हैं देखने को, आप देख सकते हो। यहाँ एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है 110 में, छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स मिले हैं यहाँ। फिर आप देख सकते हो 4 जुलाई को आप देख सकते हो 10:45 पे कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पूरा मार्केट। हार्डली हमें कोई ट्रेड मिला है, स्कैल्पिंग ट्रेड है 5-10-15 पॉइंट के लिए। ये सारे छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स आप देख सकते हो। यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिला है 2:05 में 23,850 लेवल पे, यहाँ आप देख सकते हो 25 पॉइंट्स मिले हैं इजीली। 10-15 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते थे यहाँ पे। 3 जुलाई को देखते हैं, 3 जुलाई को एक स्मॉल कैंडल बनी है 10:45 वाली। यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड इनिशिएट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 11:10 वाला लो ब्रेक किया है 10:45 का, पुट साइड में हुआ है। अगेन सेम 11:20 में पुट साइड ट्रेड दे सकते थे हम। अगेन 11:55 पे पुट साइड में बन रहा था। सो छोटे छोटे ट्रेड्स बने हैं, कोई बड़ी मूव नहीं देखने को मिली है हमें।
जनरली फिन निफ्टी एंड निफ्टी 50 में कोई ज़्यादा बड़ी मूव देखने को हमें नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। फिर 1045 वाली देखते हैं। सो यहाँ का हाई 1045 का हाई एंड लो हम मार्क कर लेंगे। क्लियर है? सो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिला है छोटा सा। देन अगेन 1135 पे एक स्कैल्पिंग है, एक लॉन्ग है पोजीशन अराउंड 23,492 पे एक हमें पुट लेना था और ये हमें अच्छा खासा इसने हमें 70 पॉइंट दिए हैं और कुछ छोटे छोटे ट्रेड है और स्कैल्पिंग वाले। लास्ट डे ऑफ द मंथ है जुलाई का, 1 जुलाई। यहाँ हम देखेंगे 1 जुलाई को हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। यहाँ हम देखेंगे mark the high and low of first 15 of 1045 कैंडल। सो यहाँ पे 11-15 में हमें क्लियरली देख सकते हैं हमें ट्रेड मिला है 23,500 लेवल पे। ये कैंडल 40 पॉइंट्स, ये कैंडल 30 पॉइंट्स 70 और एक कैंडल 80 पॉइंट्स की, ये तीनों कैंडल्स हैं। इजीली हमें हाई साइड का हम अपना प्रॉफिट ट्रेल करके ट्रेड कर सकते थे। सो ये था फिर निफ्टी फॉर दिस जुलाई मंथ। सेंसेक्स देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो सेंसेक्स का हम 10-12 दिन का देखेंगे इस महीने का, मंथ ऑफ जुलाई। फर्स्ट आप ये देख सकते हो, ये तो बहुत बड़ा मूव देता है सेंसेक्स, आपको पता है बहुत बड़ा मूव रहता है, बहुत वॉलेटाइल रहता है, सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें होती है। सो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ 1050 में 80,056 पे इसने दिया। फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो 450 क्वान्टिटी की, 450 पॉइंट की, उसके बाद 200 पॉइंट आप देख सकते हो, 850 पॉइंट, 850 पॉइंट आपको दिए हैं। जस्ट इमेजिन 850 पॉइंट कितने होते हैं, और अगर आपको एक दिन मिल जाए तो आपका 15 दिन के प्रॉफिट के बराबर है वो। अगेन आप देख सकते हो 11 को 1045 वाली कैंडल ये है, छोटी सी लाल कैंडल, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे हम। क्लियर है? सो क्लियरली आप देख सकते हो कुछ कैंडल्स कंसोलिडेट किए हैं इस बॉक्स में, और हमें फर्स्ट ट्रेड डाउन साइड का मिला है। 1045 को ब्रेक किया है, डाउन साइड पुट ट्रेड है, अराउंड 79,590 लेवल पे मिला है। सो इसने क्लियरली हमें 100 पॉइंट्स दिए हैं, 100 पॉइंट्स जो है, जस्ट इमेजिन। उसके बाद हायर लेवल पे 1045 का लेवल ब्रेक हुआ है 12-15 में 79,672 पे, और ईज़िली यहाँ भी हमें 150-200 पॉइंट्स देखने को मिले हैं। आपको पता है सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अगेन आप देख सकते हो ये कैंडल है 1045 वाला, विल मार्क द हाई एंड लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 79,600 यहाँ से लेकर इजीली आपको यहाँ दो कैंडल्स छोटी वाली 50 पॉइंट्स दे रही हैं। यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है, एक ट्रेड आप देख सकते हो यहाँ इनिशिएट हुआ है इजीली, यहाँ 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स इजीली यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिली है। आप यहाँ देख सकते हो 11:10 पे यहाँ एक ट्रेड मिला है, स्कैल्पिंग है छोटा सा, यहाँ छोटा सा ट्रेड हम लेके अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर आप देख सकते हो आगे जाके हमें यहाँ ट्रेड मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी बॉडी टच की है 1245 पे 80,240 लेवल पे हमें ट्रेड मिला है कॉल साइड का। इजीली आप देख सकते हो यहाँ तक जाते जाते 355 पॉइंट्स दिए हैं इसने,
इजी। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे 8 जुलाई का देखते हैं, जस्ट सी द वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, ऑल दो कंसोलिडेशन फेज पे है फिर भी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 845 लेवल पे 79,882 पे 1045 बनी है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे एक डाउन साइड स्कैल्पिंग है छोटी सी 20 पॉइंट की, और फिर फॉलोड बाय दिस ह्यूज कैंडल 100 पॉइंट्स। उसके बाद देखो यहाँ एक छोटी सी है स्कैल्पिंग फॉलोड बाय 100 पॉइंट्स। देखने में छोटा लग रहा है कैंडल, बट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है इसमें। अगेन यू कैन सी दिस हैज़ गिवन अ ब्रेकअप, broke the low of 1045 candle and followed by this huge 300 points। so काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पे। 5 जुलाई का देखेंगे, 5 जुलाई देख सकते हो आप, ग्रीन कैंडल बनी है इतनी बड़ी विक के साथ। सो क्लियरली यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ 11.5 पे डाउन साइड पुट साइड, इट ब्रोक द लो ऑफ 1045। यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 कैंडल्स यहाँ तक। यहाँ जब रिवर्सल होगा ऑटोमेटिकली हम अपनी पोजीशन काट देंगे इजी। फिर आप देख सकते हो 1040 पे अप साइड पे कॉल साइड पे ट्रेड हुआ है, एक इनिशिएट हुआ है इजीली, 2 कैंडल्स बनी है, 100 पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं। फिर 1155 पे आपको मिल रहा है, अगेन 1155 पे आपको ट्रेड मिला है, अगेन आपको 1210 पे ट्रेड मिला है इजी, एज इजी एज दिस। अगेन यू गॉट ट्रेड एट 1045 इजी। फोर्थ ऑफ जुलाई आप देख सकते हो 11 बजे इनिशिएट हुआ है ट्रेड, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड है 20 पॉइंट 30 पॉइंट। 11:15 में हुआ है 50 पॉइंट का एक ट्रेड है। उसके बाद यहाँ 20 पॉइंट का 11:45 में, अगेन यहाँ 12:20 में एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है कंसिक्यूटिव 3 ग्रीन कैंडल्स 200 गेव 200 पॉइंट्स। अगेन यहाँ आप देख सकते हो 2:05 में 80,151 पे एक ट्रेड इनिशिएट हुआ है इजीली, 50 पॉइंट्स दिए हैं। 3 जुलाई का देखते हैं, 3 जुलाई आप देख सकते हो रेड कैंडल बनी है, आप देख सकते हो 11:15 यहाँ एक कैंडल बनी है 11:15 में डाउन साइड बियरिश कैंडल है, 1 2 3 इतना बड़ा मूव मिला है आपको। फिर आप देख सकते हो यहाँ एक छोटा सा स्कैल्पिंग बन रहा है, छोटा सा, आई वोंट रिकमेंड, बट यहाँ एक स्कैल्पिंग बना है छोटा सा, बट इसकी विक टच कर रही है, सो आई वोंट रिकमेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी ने कट किया है, ये फुल रिकमेंडेशन है। 79,970 लेवल पे बना है इजीली, आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स मिले हैं इजी। 2 जुलाई का देखते हैं क्या सिनेरियो है 10:45 को लेके। सो 10:45 यहाँ देख सकते हो एक स्मॉल कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई, इसका लो मार्क करेंगे, इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से 10:55 पे इजीली यहाँ पे 4 कैंडल्स हायर साइड पे इजी 100 पॉइंट्स। यहाँ एक ट्रेड दिया डाउन साइड पे 12:35 पे, वी गॉट अ ट्रेड विच ब्रोक द लो ऑफ 10:45, 79,439 लेवल, gave a trade of around 50-70 points consolidation, again a downside movement of 100 points, so again profit। लास्ट चार्ट देखेंगे हम फॉर दिस ट्यूटोरियल 1 जुलाई। सो यहाँ देखेंगे व्हाट इट हैज़ टू ऑफर अस 10:45। सो हम यहाँ देखेंगे क्लियरली 10:45 का लो एंड हाई मार्क करेंगे। सेलर्स और बायर्स का बहुत प्रेशर है, यू कैन सी द कैंडल कैसी बनी है, छोटी बॉडी बड़ी विक। यहाँ पे क्लियरली हमें एक ट्रेड मिल रहा है 10:15 पे
हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा। क्लियरली यू कैन सी एक बिग रैली मिल रही है अपसाइड की, 300-400 पॉइंट्स ईजिली हम ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे हम अपना, कीपिंग इन माइंड all the things which are necessary for the trade. So that's all for the day. हमने सेंसेक्स देख लिया है 1045 पे, हमने फिन निफ्टी देखी 1045 पे, हमने निफ्टी 50 1045 पे देखी है, हमने निफ्टी बैंक देखा है 1045 पे. So 4 things we have seen for the day. At last we will see the strategy. Theory ones, 1045 strategy we have seen in bank nifty, sensex and finnifty. So 1045 strategy says it is used in 5-minute time frame. Mark the low and high of first 5-minute candle of 10:15 a.m. If the candle high breaks, go for call side. If the candle low breaks, go for put side. Always remember to trail your stop loss. So that's all behan bhai. That's all for the day. Keep trading, keep learning, and keep subscribing and keep following. Thank you.